Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. This is for mathematics, class 3rd, chapter 2, fractions. This is our lecture number 4. Topics to be covered: HOTS, page 22, exercise 2C, page 23. Now beta, we will do HOTS questions in the book. अब हम बुक में HOTS questions करेंगे and you have to listen to ma'am carefully, then you will do in your book. Clear beta? Let's start. Fill in the missing numbers and fractions in the sentences given below. Here this table is given, okay, and in this box here bars of chocolates are given. Okay, see यहाँ पर bar of chocolates हैं. Okay, and here I'm going to write sentence in which you have to fill the missing numbers and fraction. Clear? Let's start. अब हम sentence लिखेंगे पहले. See, this bar of chocolate has been shared among dash children. Each of them gets dash of the chocolate. Are you getting my point? हमने अभी ये सेंटेंस लिख लिया और अब हमें इस सेंटेंस में क्या लिखना है? In the first blank, यहाँ पर we will fill the missing number and here we will write the fraction. Okay? बेटा ये जो bar of chocolates है, this is divided into 6 equal parts. Let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? So what has asked in this sentence? This bar of chocolate has been shared among dash children. So total bar of chocolates are 6. So here we will write 6. Bar of chocolates कितने बच्चों में शेयर की गई? 6. So we will fill 6 here. Okay. So each of them gets a dash of the chocolate. हर बच्चे को कितनी चॉकलेट मिली? 1. Okay. So we have to write fraction. तो हम इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? Fraction is 1/6. क्लियर बेटा? टोटल बच्चे कितने हैं? 6 और एक बच्चे को कितनी चॉकलेट मिली? 1. ओके, सो फ्रैक्शन फॉर दिस इज 1/6. क्लियर? सी हियर. Here bar of chocolate is given. Okay, bar of chocolates are given here. So first of all we will write a sentence here in this box. This bar of chocolate has been shared among dash children. Each of them gets dash of the chocolate. जैसे आपने बेटा
फर्स्ट क्वेश्चन में किया है, वहां पर बार ऑफ चॉकलेट कितने पार्ट में डिवाइडेड थी? 6. ओके, हियर दिस बार ऑफ चॉकलेट्स are divided into 8 equal parts. Let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो बेटा this bar of chocolate has been shared among 8 children. We will write it here. तो बेटा each of them gets dash of the chocolate. Each मतलब 1. एक बच्चे को कितनी चॉकलेट मिली? 1. So fraction for this is 1/8. So we will write here 1/8. यहां पर क्या है? बार ऑफ चॉकलेट्स टोटल कितनी है? 8. जो 8 बच्चों को मिली, तो एक बच्चे को कितनी मिली? उसका हम फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे? 1/8. Clear? See here, fill in the missing numbers and fractions in the sentences given below. Here table is given. Okay, in this given table, here in this first box, bar of chocolates are given. Okay, now we have to write sentence here. This bar of chocolate has been shared among dash children. Each of them gets dash of the chocolate. So beta, this bar of chocolates are divided into 4 equal parts. 1, 2, 3, 4. तो बेटा ये चॉकलेट कितने बच्चों में शेयर की गई? 4. We will write 4 here. Each of them gets dash of the chocolate. Each मतलब 1. 1 बच्चे को कितनी चॉकलेट मिली? 1/4. फ्रैक्शन में लिखना है ना हमें. So fraction is 1/4. Clear? Now here, this bar of chocolates are divided into 2 equal parts. Okay? Now we will write sentence here. This bar of chocolate has been shared among dash children. Each of them gets dash of the chocolate. As I told you बेटा कि ये बार ऑफ चॉकलेट कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 2. Okay, so this bar of chocolate has been shared among 2 children. Okay, so each of them gets of the chocolate. एक को कितना मिला? 1/2. Fraction is 1/2. Clear? Exercise 2C. Now beta we will solve exercise 2C, question number 1 in the book. Question number 1, mark the points which represents the given fractions. Okay, beta here in part C, गिवन फ्रैक्शन इज 7/10. आपको इस गिवन फ्रैक्शन को इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. क्लियर बेटा? एज यू नो बेटा, हियर 7 is our numerator and 10 is our denominator. Okay, and here 0 and 1 are already marked on this given number line. इसमें 0 और 1 इस नंबर लाइन पे पहले से ही मार्क्ड है बेटा. Okay, so beta, as I told you here 7 is our numerator and 10 is our denominator. तो बेटा जैसे कि हमारा 10 डिनोमिनेटर है, तो ये जो
नंबर लाइन है ना, दिस इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। तो ये गिवन नंबर लाइन 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। ओके, लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। clear beta? So beta, here on this given number line, this first point means, इस first point का means है 1/10. okay, second point means 2/10, third point means 3/10, fourth point means 4/10, fifth point means 5/10, sixth point means 6/10, seventh point means 7/10, eighth point means 8/10, ninth point means 9/10। क्लियर बेटा? अब बेटा आपको क्या करना है, यू हैव टू रिप्रेजेंट 7/10। अब हम 7/10 को इसमें रिप्रेजेंट करेंगे। मीन्स कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बाय मार्किंग द पॉइंट, उस पॉइंट पे मार्क करके या फिर उस पर सर्कल करके। क्लियर बेटा? तो यहां पर हमने किस पे मार्क या सर्कल करना है? 7/10, इस पे हम सर्कल कर देंगे। क्लियर? अंडरस्टूड? इन पार्ट डी our given fraction is 3/10. okay, and we have to represent 3/10 on this given number line. okay, here in 3/10, 3 is our numerator, 10 is our denominator, and 0 और 1 और 0 और 1 आपके ऑलरेडी मार्क्ड है इस गिवन नंबर लाइन पे। okay beta, as you know, here our denominator is 10, so this number line is divided into 10 equal parts. Let's count 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. okay, so here first points mean, फर्स्ट पॉइंट का क्या मतलब है? 1/10. सेकेंड पॉइंट मीन्स 2/10. थर्ड पॉइंट मीन्स 3/10. फोर्थ पॉइंट मीन्स 4/10. फिफ्थ पॉइंट मीन्स 5/10. सिक्स्थ पॉइंट मीन्स 6/10. सेवन पॉइंट मीन्स 7/10. eighth point means 8/10. ninth point means 9/10. okay, as beta you know, you have to represent this given fraction 3/10. आपको इस 3/10 को रिप्रेजेंट करना है, तो आप क्या करोगे? 3/10 पे सर्कल कर दोगे या इसको मार्क कर दोगे। ओके, नाउ वी विल सर्कल हियर 3/10. Understood beta? Now beta, today's homework. Today's homework is read page 23, fractions on the number line, exercise 2C, do question 1, page 23, parts A and B in maths book. Understood? आपको होमवर्क में 23 पेज रीड करना है, जिसमें आपको क्या रीड करना है बेटा? फ्रैक्शंस ऑन दी नंबर लाइन. व्हेन यू विल रीड दिस पेज, जब आप ये पेज रीड करोगे, यू कैन इजिली डू दिस वर्क. एक्सरसाइज 2C.
Do question 1, page 23, parts A and B in maths book. These two parts are based on the number line. Clear? जब आप इस पेज को पढ़ोगे then you can easily do these two parts in homework. और मैथ्स की बुक में करने हैं. You have to do these two parts in maths book carefully. Okay? बेटा क्वेश्चन नंबर 1 मैम ने आपको बुक में करने के लिए दिया है. देन बेटा these two parts are this. ये वाले दो पार्ट्स हैं जो आपको होमवर्क में करने हैं. क्वेश्चन 1, mark the points which represents the given fractions. पार्ट ए में बेटा फ्रैक्शन इज गिवन 1/5. आपको इस नंबर लाइन पे यू हैव टू रिप्रेजेंट दिस गिवन फ्रैक्शन 1/2 और आपको क्या करना है, यू हैव टू मार्क दी पॉइंट्स. ओके. इन पार्ट बी फ्रैक्शन इज गिवन 5/7. आपको इस गिवन नंबर लाइन पे बेटा यू हैव टू रिप्रेजेंट दिस फ्रैक्शन 5/7 और आपको क्या करना है, पॉइंट्स को मार्क करना है. क्लियर? Now beta we will discuss homework solutions which I had assigned in the previous lecture. Question number 4, shade the collection according to the given fractions. आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है और आपने according to the given fraction you have to shade the collection. You have already done in homework. You have to cross check as ma'am is going to discuss homework solution. Part A. Fraction is given 1/8. So here in this given collection you have to shade only one part. Total parts are 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Total parts are 8 in this given collection. You have to shade only one part. See. Understood मेरा बेटा? Clear everyone? Now, part B. Here in part B beta, fraction is 9/10 and given collection is this. Total parts are 10 and we have to shade 9 parts out of these 10 parts. Let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Total parts are 10. Out of these 10 parts, we have to shade 9 parts. See. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Understood? Now beta, in homework solutions, we will discuss part C and D. Okay? Question was 4. Question 4. Shade the collection according to the given fractions. Part C. Here in part C, given fraction is 2/5. See, here in this collection, total parts are 5. 1, 2, 3, 4, 5. So we have to shade 2 parts out of these 5 parts. 1, 2. Clear?
Part D. Given fraction is 3 upon 7 and collection is this. Let's count these. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. In this collection, total parts are 7. We have to shade 3 parts. 1, 2, 3. Okay? Understood, beta?